All right. Okay. So welcome to lecture 19 of data mining. So also welcome back from the Eid break. So we are going into the last stretch of our course. So this is lecture 19 and we I think have about 10 more lectures, 10 to 11 more lectures. So we started discussing cluster analysis in the previous lecture before Eid. We introduced what cluster analysis was. We also briefly touched about various applications. It has applications in different domains. And then we talked about types of clusters, clusterings, and algorithms. And we mentioned that there are two important components of any clustering algorithm. One is the similarity or proximity measure, and the other is the actual algorithm or the logic behind the clustering. So we call that clustering criterion. Uh, so we discussed the proximity measures last time. And we discussed them for various data types, primarily for tabular data and various data attribute types. So today, primarily, we'll be discussing with the first category of clustering algorithms, the partitioning clustering algorithms, and in particular, we start talking about the K-means algorithm. And then we'll discuss other additional algorithms as well. So that is basically the idea for today. All right. So are there any questions? So we started talking about cluster analysis last time. And if we specifically talk about the types of algorithms for clustering, we can think about partitional or partitioning. Algos, and then we have what is known as hierarchical algos, and then there are also some hybrid algorithms as well, which includes components of both of these algorithm types. And there are some other classifications as well, grid-based algorithms or graph-based algorithms. Okay, so there's a question regarding similarity or proximity measure that we discussed last time. Uh, so if you have multiple binary or ordinal attributes in for one object or okay, so let me just, so if you have multiple binary attributes, so for example, multiple binary only, so in this case, this is so in this case, you can use all the measures that we studied earlier with respect to association mining. So those same measures can be used. In other words, you create a contingency table. So just to give you an example, let's say आपके पास test 1 है और test 2 है, ठीक है? So test 1 and test 2 है, and you want to, these are the two, you can say, uh, the two binary attributes that represent the two objects. So if you have one here and one here, and then you have, let's say, 0 and 1 here, so you can consider this to be, you can create a contingency table from this. Okay? So, so in other words, you will be matching, uh, each attribute value. So 1 and 0, the first attribute. So T1, you will be matching the first observation as 1, the second as 0. So this is not a match. So in other words, from this table, you will get your A, B, and C and D values. So A values would be those that you have both attributes match. So how many
attributes match. So वन वन आपका मैच है, ये वन है, ये भी वन है. So there is one match. So A would be one. So A would be one. So what is B? So B, let's say the first one matches, the second one, the first one is one, the second is zero. So that will be also one because the first attribute observation one है. B is also equal to one. So what about C? The reverse जो है दोनों वो कोई भी नहीं है. C is equal to zero. And then D is also equal to zero. दोनों zero नहीं है. तो आपके पास ये जो values आ गई, and then you can compute your similarity in the same way that we used the measures that we used earlier. For example, Jacob coefficient में क्या होगा? A divided by A plus B plus C. ठीक है. So this is the case for when all the attributes are binary. ठीक है. And let's say if they are mixed, you consider binary as one block और उसका similarity measure separate निकाल लें using this approach. और बाकियों का जो निकलेगा, you use a normalized measure that we talked about for mixed attribute और दोनों को ऐड कर दें, एवरेज ले लें. So if you have multiple ordinal, for example, जैसे last time भी शायद example दी थी, so let's say आपके पास एक grade attribute है और let's say एक आपका class में rank है, तो each of them you consider separately and take the average. So this is now multiple ordinal attribute. And if it is mixed, हर एक को separately consider करें. आपका क्या था A? So what was the question? I didn't get your point. D equal 1, D is the case for when both values are 0. So in this particular case, both values किसी की 0 नहीं है. T1, T2 एक either 1 है, एक 0 है, दूसरे में दोनों 1 है. ठीक है. So दोनों 1 है, which is A. एक 1 है, एक 0 वो B है. और C जो है दूसरा 1 है, वो पहला 0 वो 0 है, और D दोनों 0 वो भी 0 है. इसको जैसे जैकब कोफिशिएंट आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, कोसाइन कर सकते हैं आप. You can use others as well. So if you have multiple ordinal, so हर एक को आप separately consider करेंगे. So grade में let's say ये 4 है और rank इसका 1 है, और ये let's say ये 2 है, इसका rank 2 है. ठीक है. तो then you can consider each attribute separately. So 4 minus 2 divided by जो भी maximum possible difference है, let's say 5 है, plus उसके बाद जो दूसरी value है, 1 and 2. ठीक है. So इसमें basically 2 minus 1 divided by let's say 3. So this is the value that you get. So by the way, in the last lecture, I think ये मैंने calculations कुछ की थी. I think there was a typo there. I actually corrected the typo in the PDF that I uploaded on LMS. So you should make a habit of looking at the PDF again uh, after I post it on LMS. So during class typos हो सकते हैं. ठीक है. ठीक है. So does that answer your question और ये कोई question आपका different था? अच्छा. ठीक है.
अच्छा, चले फिर हम सिमिलैरिटी मेजर्स की बात कर रहे हैं, तो लेट मी मेंशन अ कपल ऑफ अदर थिंग्स जो बाद में भी हमने खैर मेंशन करनी थी, बट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस दिस एज वेल. So as we mentioned in the previous lectures when we were discussing neural networks, much of modern day data science is based on embeddings. ठीक है? So embeddings are representations of objects in some space, and usually that space is a continuous space, a d-dimensional continuous space or n-dimensional continuous space. And we can learn these embeddings using various neural network techniques. One very simple way to learn embedding for a tabular data is to use the autoencoder. Okay? So we discussed the autoencoder last time as well. So you can convert your input tabular data that might be categorical, that might contain both categorical and numerical attributes into the neural network, try to obtain the same values as the output. The middle layer in your autoencoder would then represent the embedding, and those would be continuous values. So remember when, let's say if your input values are categorical, let's say आपके पास जैसे कोई कलर का एट्रीब्यूट है, और कलर लेट्स से तीन कलर्स हैं आर जी और बी है. So for neural networks, obviously neural network cannot process categorical data. You have to convert this into numbers. Or the best way or the easiest way is of course the one hot encoding. तो आपके पास let's say ये एक कलर एट्रीब्यूट को आप तीन बाइनरी एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट कर देंगे वन ऑफ के इनकोडिंग. सो कलर को आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे आर जी एंड बी में. सो लेट्स से इफ आपके पास कलर लेट्स से आर था, तो आपका जो एक्चुअल इनकोडिंग जो होगी आर जी बी, ये वन होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा. So there will be only one value in these three values. So obviously now these values are binary. There might be some values in your data set that might be continuous. For example, let's say age की value है, या किसी की salary है, या किसी की height है, या कोई weight है. ठीक है? And there might be other values that might be of other types. For example, ordinal है. Let's say आपके पास rank है, या grade है, या role है किसी employee का company में. So all of this can be converted into numeric and fed into the neural network. But जो hidden layer में जो values आएंगी, they will always be continuous, and depending on the activation function, usually we use tangent hyperbolic, they will be both positive and negative values. So that is the embedding, the representation that is in continuous space, and that is hopefully much more amenable to clustering as well as to other data science tasks that you might want to do. Okay? So the point that I wanted to highlight here is that modern day data science में आपके पास attribute benchmark, let's say different types के भी हैं, तो आप उसको convert कर सकते हैं to all continuous through this approach of representation learning or embeddings. Once you have your attributes in embedding space, they will be all continuous, and then you can go ahead and apply any clustering algorithm that is good for continuous attributes. ठीक है? And that is the preferred approach actually. तो इन ओल्डर टाइम्स हम बड़ी स्पेसिफिक टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते थे जो कैटेगोरिकल डेटा के लिए होती थी या कोई ऑर्डिनल डेटा के लिए होती थी, क्लस्टरिंग टेक्निक्स. But they usually did not perform as well as first converting them into embedding space and then applying your strong algorithms like k-means. So after converting in embedding space, the two most popular similarity measures are cosine and then of course the Euclidean. So these are the two most popular similarity measures that you can use once you have your data in embedding space, which is a continuous space. ठीक है. So let's now move to our clustering algorithms. Any question? Maybe to move a bit quickly, let me go back to the slides. Okay.
Okay. So the first category of algorithms that we mentioned was called the partitioning algorithms. As the name suggests, these algorithms partition the data set into some given number of clusters. So that given number is taken as an input. So K is the number of clusters that you desire, and you give that as an input to the algorithm, and the algorithm will run and then find those, divide that data into K non-overlapping clusters. And in most partitioning algorithms, there is usually a objective function that is being optimized in most. Okay? So in other words, these algorithms are usually more mathematically rigorous. They are not purely heuristic. They are trying to optimize a objective function. And that objective function, of course, is devised in a way such that you can get a good clustering. So I'll just mention this clustering objective function in my notes shortly. इसको मैं skip करता हूँ. So the problem definition here is that given a data set D, which consists of n objects, group those n objects into k clusters, where k is your input. And obviously, implicitly, it's trying to minimize, optimize objective function. The algorithm itself is quite simple. Okay? You start, and this algorithm, by the way, is an old algorithm. It was proposed in 1967, sometimes even earlier, and it has been the center of data science since then. So the 1970s, 1980s, 1990s, 2000s, until up till today, it's one of the most popular data science algorithms. Both from a practical perspective, meaning that it's heavily used, and also from a theoretical perspective, it is heavily studied. So even today, you will find papers that are dedicated to the k-means clustering algorithm, even though it has been around for over 3 decades or almost four decades. So in this algorithm, each cluster, remember we mentioned that there are different types of clusters. In this k-means algorithm, the cluster is represented by the centrally located point in the cluster. Okay? So that point is actually the mean of all the objects in that cluster. So that's where the name comes from, k-mean. So given k, again, k is an input. So select the k points as the initial centroid. So usually these k points are actual objects. ठीक है, actual objects हैं वो हम select कर लेते हैं as the initial centers of the clusters or the means of the cluster. ठीक है? Then you do a loop where you then assign every other object to the nearest center, nearest mean. So how many means do we have? We have k means. तो हम सारे पॉइंट्स को द नियरेस्ट मीन पे असाइन कर देते हैं. ठीक है? एंड वंस यू हैव असाइन every point to the nearest mean, you get a cluster. अब आपके पास ये cluster आ गया which has all the objects in it. So now you recompute the mean. Because उन सारे objects का आप जब mean निकालेंगे, maybe the point might have changed. आपके पास नया एक centroid आ गया. And then you repeat. फिर आप assign करें, फिर mean assign करें until there is no change in the assignment of object to clusters. So this is the very simple algorithm. And we will discuss the details of this shortly, but let me finish the simple example. So this pictorial examples will give you a further idea of how it works. So let's say in the first figure on the top left, you have the
data set which is in 2D space, so black dots. So randomly हमने दो पॉइंट चूज कर लिए, एक ब्लू एस्टेरिक है और एक रेड एस्टेरिक है. सो वी से दैट वी वांट टू क्लस्टर इनटू टू क्लस्टर्स. सो दो हमने सेंटर्स ले ली या मीन्स ले लिया. अब वो दो सेंटर्स या मीन्स आ गए हमारे पास. इन द नेक्स्ट फिगर वी असाइन एवरी ब्लैक डॉट टू द नियरेस्ट ब्लू और रेड एस्टेरिक. जिसके साथ सबसे करीब है उसको हमने असाइन कर दिया. जब हमने असाइन कर दिया वहां पर ग्रुपिंग आ गई. सो नाउ यू हैव ए रेड क्लस्टर एंड अ ब्लू क्लस्टर. ठीक है. सो हमने उसको सर्कल से डिनोट कर लिया, सिंपली ट्राइंग टू कंबाइन ऑल द ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू वन क्लस्टर. So once you have combined all the objects into one cluster, you can recompute the mean, because mean might have changed. तो आप recompute करेंगे mean तो आपका नया asterisk आ जाएगा, blue and red asterisk. अब आपका नया asterisk आ गया, you check again, do the assignment again. Has the assignment changed or not? मतलब हर black dot को आप फिर check करेंगे किसके साथ करीब है, blue के साथ करीब है या red के साथ करीब है. If there's a change, then you repeat, meaning that कि आपके पास नई clustering आ गई. Do the mean again until there is no change, meaning that कि आपकी clustering stable हो गई है. ठीक है. So the last figure in this slide, I think the on the right bottom shows you the final clustering. ठीक है. Of course, this number of steps can be multiple in large data sets. ठीक है. So again to repeat, you start with choosing k points randomly as your starting means. You assign objects, then you do a repetition. You assign object to the nearest mean. Once you have done the assignment, that is your cluster, but that cluster might have changed the mean. So you recompute the mean and repeat until there is no change. Okay? So this is the simple algorithm. But as I said earlier, iski theory has been studied extensively. 4 decades it has been studied. So there's a lot of theory behind it. Of course, बहुत ज़्यादा हम theory में भी नहीं जाएंगे, but we need to highlight some key points. So we are talking about the k-means algo. ठीक है. So let's say we have our data set D. X, I, and I is equal to, let's say, 1 to n. So n data points हैं. And k has to be provided by the user. So usually k is much less than n. So this is the number of clusters desired. Okay. So k is the number of clusters that is desired, and this is required as an input. Okay. So the objective function, let me write that down and then we'll explain what it is. So the objective function is, let's say, a loss function भी कह सकते हैं, error function भी कह सकते हैं, right? Error function, sum over I, and then you sum over k, small k. ठीक है. K is equal to 1 to capital K, I is equal to 1 to n. ठीक है. And then this equation is slightly different from the one in the slide, but I will explain this. Capital I, Ik, and D, Xi, and then Mk. Okay. So D is the dissimilarity between object Xi and Mk. What is Mk? Mk is the mean for cluster K. So K is equal to 1 to K and I is equal to 1 to N. So Mk is the mean of cluster K. So cluster K को हम basically CK भी कह सकते हैं. ठीक है. Capital CK. This represents the cluster K.
And of course, xi is the object. And d is basically the dissimilarity function. And what is I? So we are talking about I. Just a second. Ik. So this is an indicator function. So how does this work? So basically ik is equal to 0 if x, ओके पहले 1 कर देते हैं, 1 I belongs to ck. ठीक है. So if object xi is clustered to cluster ck, then this is 1, otherwise it is 0. So in other words, जो ऊपर summation हमने लिखी थी, that is summation of all objects within a cluster, and of course for all the clusters in the clustering. So indicator function simply says that कि हमने हर object xi का हर cluster के साथ distance नहीं निकालना, सिर्फ उसके अपने cluster से निकालना है, जिस cluster में वो है. ठीक है. So that's the primary purpose of the indicator function. बाकियों को वो zero कर देना. So essentially, in words, what is this objective function? This is a sum of every object from its respective cluster mean. And the optimization problem, we want to minimize this. So if you minimize this, it means that you will get compact clusters, meaning that each object is assigned to its nearest or closest mean. Okay, so this is the objective function that is actually being optimized by that simple algorithm that we saw earlier. Okay, so this optimization, so we want to minimize this objective function. So this optimization problem is actually a non-convex optimization problem. Okay, so what does that mean? So non-convex optimization problem जब होती है, if you solve it through an iterative process, you are not guaranteed a global minima. ठीक है? So global minimum is not guaranteed. So only local minima is achieved. ठीक है? For any run of the algorithm. ठीक है? For any run of the algorithm. ठीक है? And the process that we saw earlier, that was actually a quite general optimization technique for such kind of problems, which we won't go into much detail, but it's important that I mention this. So the process is actually following a very general process of optimizing algorithms which is called expectation maximization, algo or M algorithm. Okay? So the algorithm that we saw for k-means is actually the EM algorithm for optimizing this objective function. Okay? Expectation is actually computing the mean. Maximization is actually, in this case, is minimization. Is actually assigning object to the nearest cluster.
ठीक है। All right. So any questions here before I briefly discuss a small toy example and then move forward? Because there are other things that we would like to discuss in this algorithm later on. So the takeaway so far is that this is a partitional algorithm that requires K as an input, and it solves an optimization problem. The solution of the optimization problem is iterative. It actually follows a well-defined generic algorithm for solving optimization problem, which is called expectation maximization. It starts with some random selection of the K means, then repeats over multiple iterations until no change, where we assign each object to the nearest mean. Okay? And that's essentially it until, as I said, no change. अब उसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डी जो था, दिस इज योर सिमिलैरिटी फंक्शन. ठीक है, द डिसिमिलैरिटी फंक्शन. The most common dissimilarity function, so most common and the original dissimilarity function that was used as proposed by McQueen was the Euclidean. ठीक है, but this framework can incorporate other uh, functions as well. So Euclidean in a way is kind of L2 norm, but you can also use L1. You can also use cosine. ठीक है, ये भी यूज हो सकता है. ऑफ कोर्स कोसाइन वुड बी सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी को आप मैक्सिमाइज करेंगे ऑफ कोर्स इन द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, बट आपकी जो असाइनमेंट है वो उसी तरह ही चलेगी. ठीक है. Okay, so let me quickly take a small toy example and then we can move on to some of its characteristics of the algorithm. So let's say you have a 1D data set. ठीक है. So 1D data set है, भी तो simple numbers हैं. So let's say मेरे पास है 3, 5, 6, 8, 9, 13. ठीक है. 3, 5, 6, 8, 9, 13. So there are 6 points. Okay. And let's say we want to cluster into 2. So initially, you might start with 2 random points. Those can be points, those can be actual objects or some random points in that space. So let me take just objects. So मेरे पास 3, 5, 6 है. ठीक है. So let me take 3 and 6 as the initial means. ठीक है. So initial mean, let's say 3 and 6. So in other words, cluster 1 जो है उसका इनिशियल मीन जो था m जो था वो 3 था. अब इसको, और दूसरा C2 का m जो था वो 6 था. ठीक है. अब हम हर ऑब्जेक्ट को क्लस्टर करेंगे टू द नियरेस्ट मीन. ठीक है. अब पहला हमने ऑब्जेक्ट 3, 6, 9 है. 3 को हमने देखा 3. अब ऑब्वियसली दिस इज 1D, वेरी इजी टू सी. 3 to 3 minus 3 is 0. 3 minus 6 is 3. So किसके साथ क्लोजर है? इट इज क्लोज टू 3. So 3 goes to 3. ठीक है. So बेसिकली ये आपका क्लस्टर बनने शुरू हो गया. What about 6? So 6 minus 3, 3, 6, मेरे पास क्या थे पॉइंट्स? 5. Okay. So next वहाँ पास 5 है. 5 minus 3 is 2. 5 minus 6 is 1. इसका मतलब है कि it goes to the second cluster. So 5 goes to the second cluster. ठीक है. So what about 6? 6 minus 6 is 0. 6 minus 3 is 3. 6 भी इधर आएगा. ठीक है. What about 3, 5, 6? 8 भी इधर आएगा because 8 minus 6 is 2 and 8 minus 3 is 5. And then
वी हैव 9 भी इधर आ जाएगा एंड 13 भी इधर आ जाएगा। तो ये आपके क्लस्टर बन गए। सो नाउ वी हैव टू क्लस्टर्स। पहले क्लस्टर में एक ऑब्जेक्ट है 3, सेकंड में आपके पास बाकी रिमेनिंग 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। सो नाउ यू रिकम्प्यूट द मीन। बाय द वे पहले वाले का मीन वही रहेगा बिकॉज एक ही ऑब्जेक्ट है। सो C1 इसका मीन बेसिकली वही 3 है। C2 इसका मीन किस तरह निकालेंगे हम, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस इज 1D तो सिंपल आपने उसका सम करके डिवाइड बाय कर देना। आपके पास क्या था वैल्यूज, 3 था, 5 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइड बाय 5। सो 8.2, ठीक है। सो नाउ यू डू द क्लस्टरिंग अगेन, ठीक है। सो यू डू द क्लस्टरिंग अगेन, 3 of course goes to 3. So what about 5? 5 minus 3 is 2. 5 minus 8 is greater than 2. So 5 इधर आ गया। So what about 6? 6 minus 3 is 3. 6 minus 8 is 2.2. तो 6 उधर ही जाएगा, ठीक है। So 6 इधर भी आएगा। बाकी सिंस दिस इज लीनियर आपको पैटर्न पता चल गया तो बाकी भी सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर न्यू क्लस्टरिंग, देन यू रिपीट। तो फिर आप आ जाएंगे C1। इसका मीन क्या होगा, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4। और दूसरे का C2 का मीन होगा 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13। सो 9, तो पूरा 9 है, ठीक है। सो नाउ डू द असाइनमेंट अगेन। So 4 है, so 3 would come here, 5 would also come here, 6 would also come here, right? And 8, 8 का 4 के साथ 4 है, so that's all. So यहाँ आपके पास of course 8 होगा, 9 होगा, 13 होगा, ठीक है। So you do the computation again. So C1 इसका मीन क्या होगा, 3 प्लस 5 प्लस 6, 3 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, 4.6, ठीक है। तो दूसरा आ गया C2 का M, 8 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइड बाई 3, सो यहाँ हमारे पास 3 5 6 आ गया। व्हाट अबाउट 8? 8 माइनस 4.66, 8 माइनस 4.66 एंड 8 माइनस 10, सो 8 नीचे ही रहेगा, ठीक है। सो वी आर डन। सो 8 9 एंड 13, सो देयर वाज नो चेंज फ्रॉम द प्रीवियस टू दिस, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर क्लस्टरिंग। तो C1 में आपके पास 3 5 6 है और C2 में 8 9 और 13 है, ठीक है। सो इफ यू हैड मल्टी डी डेटा सेट, लेट्स से आपका एक डेटा सेट में 3 और 5 है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है लेट्स से 4 और 6 है, तो मीन मीन उसी तरह ही निकलेगा, हर एट्रीब्यूट का एवरेज ही होगा, ठीक है। सो द मीन वुड बी व्हाट, 3.5 एंड क्या था,
3.5 and 5 and 5. So this would be the mean. So basically 3 और 4 का एवरेज और 5 और 6 का एवरेज, 5 और 6 का 3 5, so 5.5. ठीक है, ठीक है. So this would be the mean. And then of course distances आपके Euclidean distance होंगे या cosine similarity को जो भी आप यूज कर रहे हैं between an object and the current mean. ठीक है, so the algorithm as you can see is fairly straightforward, but behind it, as I said, it minimizes the objective function, and that objective function does make sense with respect to clustering. It tries to minimize the sum of the distances of every object from its respective cluster. So since you are minimizing that, you get objects that are assigned to the correct cluster. ठीक है? So now let's study some characteristics of this algorithm. Okay. So computational complexity पहले देख लेते हैं. So computational complexity में essentially क्या हो रहा है, आपके पास k clusters हैं, and then you repeat for some number of iterations. Let's say t is the number of iterations. ठीक है? And n आपको पता है क्या है? So n basically number of objects हैं और k is number of clusters हैं. So you are repeating t times, and each time for every object you compare it with k means, and जिसके साथ minimum है उसको आप assign कर देते हैं. So essentially ये straight forward इसकी complexity आ जाएगी आपके पास, basically t k n. So importantly, it is kind of dependent on n in a linear fashion. So we know that k is in general much less than n. So in other words, this algorithm is efficient from a computational perspective. Iterations जो t हैं, that is also usually quite small. For most practical data sets containing thousands of even observations, t would typically be less than 10. Number of iterations would typically be less than 10. So k, let's say जो भी आपके number of cluster desired हैं, usually it application dependent. It could be a handful or it could be a few dozen depending on the application. And n is of course the total number of observations, which of course is can be quite large. But from a computational perspective, it is an efficient algorithm. All right. Okay. So what else? So let's look at some of its characteristics. So it is efficient, so that's a positive. It gives you a local minima, that is also a positive. As we will see later on, some other techniques that we study do not provide any mathematical guarantees. So local minima is still a mathematical guarantee of an objective function. Okay, so it has a criterion that is mathematical based, not heuristic. Okay, that's another positive. It's efficient, so that's positive. So anything else that you can consider to be a positive? बाकी as such positives नहीं है, but some characteristics हैं that might be considered as negative, so it can be only be applied to numeric data. ठीक है? Because you need to compute the mean, right? Mean निकालने के लिए आपके पास numbers ही होंगे
एंड ऑफ कोर्स रैशनल नंबर्स ही होंगे, फिर ही मीन निकलेगा, अदरवाइज मीन ही निकलेगा। ठीक है, सो इट्स एप्लीकेबल टू न्यूमेरिक डेटा ओनली। ठीक है, what else? It is sensitive to, in general, to outliers. So why is that? Because हम distance compute कर रहे हैं of every point from its respective mean. Let's say ये इसका mean था, ये distance compute कर रहे हैं. If a point is very far away, ये वाला distance, which, let's say this point is a outlier, और ये इसका mean इधर है, closest mean, बाकी let's say mean दूसरे हैं, दूर दूर है, तो ये इसको इस पूरे क्लस्टर का जो सम है वो काफी बढ़ा देगा, इवन दो लेट्स से बाकी सारे पॉइंट्स इधर हैं, एक ये पॉइंट इतना दूर है, इसका डिस्टेंस जब ऐड करेंगे तो टेंड टू पुल दिस मीन टू दिस साइड, इवन दो दिस इज लाइक एन आउटलायर, बाकी सारे पॉइंट्स इधर हैं, so it will pull the mean to some place here, so it's quite sensitive to outliers. ठीक है, uh, some properties of the cluster that it forms, so it is also okay, sensitive की बात हो रही है, पहले कर लेते हैं, sensitive to initial means. So जो आपने इनिशियल मीन्स सेलेक्ट किए हैं, इट इज ऑल्सो सेंसिटिव टू दैट। रिमेंबर लोकल मिनिमा की बात की थी हमने, तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ए डिफरेंट इनिशियल मीन्स, इट माइट टर्मिनेट at a local minima which is different from another local minima. ठीक है, so it is sensitive to this initial mean that you select. So इनके कुछ workarounds हैं, we'll discuss that shortly. What else? So it basically finds spherical clusters even if the original clustering is not spherical. Um, सही है, so let's see if I can use my to that later. ठीक है, and also there's another, because of the optimization, it tends to find clusters of about equal size, even if in the original data they are not of equal size. ठीक है, so these are some characteristics that might be considered to be negative and for which you need to be aware of. ठीक है, sometimes also another thing, it may return meaning that some cluster may become empty. So this is also sometimes a problem that might arise in using the algorithms. Meaning that के आपने clustering, let's say k cluster ढूंढने थे, k mean से start किया, maybe एक कोई mean आपने ढूंढा, वो mean ऐसा था जिसमें कोई object assign ना हुआ, so in other words, in practice आपका वो पूरा एक cluster drop हो गया, because उसका mean, वो उस mean को कोई object assign हो ही नहीं रहा, because it is that mean is far away from all the other means. So that is also possible, and इसके भी workaround है, but we will discuss that. So let me try to see कि I can show you some visualization. So first of all, let me just show. Let's say आपके पास, just to give you an idea, कि let's say random points हैं 2D में.
रैंडम पॉइंट्स हैं। बाय द वे, ये आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं मेरी स्क्रीन पे? ठीक है, गुड। सो लेट्स से रैंडम पॉइंट्स हैं। लेट्स से आपने रैंडम पॉइंट्स इन ए 2D ग्रिड। आपने लेट्स से इधर एक स्टार्टिंग यहाँ कोई पॉइंट ढूंढ लिया और लेट्स से यहाँ ढूंढ लिया, तो वो क्लस्टर यूं ढूंढ लेगा। ठीक है, रैंडम थे। लेट्स से आपने वही 2D ग्रिड में लेट्स से इधर एक लेट्स से ढूंढ लिया और इधर स्टार्ट किया, तो आपके क्लस्टर ये बन जाएंगे। So that's what I'm saying, is that even if you don't have intrinsic clusters in your data, by starting with some initial seeds, it will still output some clusters. So that's another thing that you need to keep in mind. And this is actually true for all clustering algorithms. हमारा एक्चुअली गोल होता क्या है कि आपके पास कोई डेटा है, वी वांट टू फाइंड इंट्रिंसिक क्लस्टर्स इन द डेटा, मतलब नेचुरल ग्रुपिंग्स विद इन द डेटा। एंड फॉर पार्टीशनल एल्गोरिथम, इफ लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर केस रैंडम डेटा था, 2D ग्रिड में इक्वली स्पेस था, एंड यू से यू वांट टू फाइंड टू क्लस्टर, एल्गोरिथम दो क्लस्टर निकाल के दे देगा। बट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम सम डिफरेंट इनिशियल सीड, वो डिफरेंट क्लस्टर्स कर देगा। कोई वो ऊपर वाला दो पॉइंट्स ले लेगा, नीचे वाले ये वाले क्लस्टर्स ले लेगा, या वो वाले क्लस्टर्स ले लेगा। सो दिस शोज बोथ पॉइंट्स। एक पॉइंट ये बता रहा है कि इंट्रिंसिक क्लस्टरिंग हो या ना हो, के मीन्स आपको कुछ दे देगा। दूसरा ये पॉइंट बता रहा है इट इज सेंसिटिव टू इनिशियल पॉइंट्स दैट यू चूज एज मीन्स। ओके, अनदर पॉइंट दैट वी सेड कि ये स्फेरिकल क्लस्टर्स ही ढूंढता है। लेट्स से मेरा ओरिजिनल डेटा क्लाउड कुछ इस तरह का है। इस तरह का डेटा क्लाउड है। यहाँ जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, दीज आर डेंस रीजन्स। ठीक है, इफ यू अप्लाई के मीन्स टू इट, it would kind of split this into two. So I'll draw it here because I can't see the original one. So let's say मैंने original ये draw किया था U. It might split the two into these clusters like this. Naturally वो cluster जो उस तरह के थे, उस shape के थे, एक चांद का shape का था, एक circular shape था, उस तरह नहीं ढूंढेगा। It will kind of group as a sphere, meaning that कुछ चांद का part भी उसमें आ जाएगा, कुछ उस sphere का part भी इसमें आ जाएगा। So in other words, sometimes we also say that it finds only spherical clusters, or it cannot find non-convex clusters. Convex clusters ही ढूंढ सकता है, non-convex नहीं ढूंढ सकता। Even if in the intrinsically in the data there was non-convex cluster, it will output groups that are essentially convex. And one of the reasons, the primary reason for this is that it is representing each cluster by the center point. This, okay. So basically एक center point जब आपने कोई क्लस्टर लिया तो okay. So since you are finding distances from this point, so kind of एक sphere बनेगा। एक central point से distance minimum उस वक्त होगा जब वो objects center पे है, वो mean center पे है। So that's where you get the sphere. The sum of distances of points from any other point would be minimum if that point is a central point. Remember, हम optimization इसी की कर रहे हैं। So that's why you get spherical clusters. What else? और क्या चीज थी that we wanted to show you? So non-convex clusters नहीं मिलते, spherical clusters मिलते, sensitive to initial means, and if you change the mean, you might get a different clustering, and it would always give you output as clusters, even if intrinsically there may be no clusters in the data, meaning the random data पे भी वो clustering निकाल देगा। One other thing we mentioned के let's say there's an outlier, let's say ये आपके पास एक cluster है और एक object इधर है, इसका मीन इधर होना चाहिए, बट इफ यू ऐड दिस टू दिस पॉइंट, इसका मीन खींच के वो इधर ले आएगा और ये पूरा एक क्लस्टर बन जाएगा, इवन दो ये पॉइंट वाज एन आउटलायर। ठीक है, ऑफ कोर्स इसको आप हैंडल कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज हैव सम सॉल्यूशंस।
बट इफ यू यूज द बेसिक के मीन्स तो इस तरह के इश्यूज आएंगे. So any questions? No questions. So I'm going to press escape here. Okay. Okay. So a convex cluster is a spherical cluster. तो जो स्फेरिकल नहीं है तो उसको हम कह लें नॉन स्फेरिकल भी कह सकते हैं, नॉन कन्वेक्स भी कह सकते हैं. कॉन्वेक्स की डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है, बट आई थिंक दैट्स नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपकी शेप, मतलब इस तरह की गोलाई में ही हमेशा कोई क्लस्टर आएगा, कोई इस तरह का इंसाइड यूं करके कट्स नहीं आएंगे. ऑफकोर्स उसी से ही आपकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन आती है. अच्छा, सो नॉट ब्रीफली डिस्कस के इनको रिजॉल्व किस तरह करेंगे सम ऑफ दीज इश्यूज. हमने, हमारा टाइम है 1:45 तक. ठीक है, टाइम है. ठीक है. सो फाइंड क्लस्टर्स ऑफ इक्वल साइज. एक छोटा क्लस्टर, एक बड़ा क्लस्टर, अगेन बिकॉज वी आर मिनिमाइजिंग एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. दो इक्वल साइज के क्लस्टर्स वुड हैव ए लोअर मिनिमा एरर एज कंपेयर टू एक बड़ा और एक छोटा. So this is also because of the criterion that we have used. Spherical clusters because we are using the center point as the prototype और हर ऑब्जेक्ट उसके साथ डिस्टेंस निकाल रहे हैं. So sensitive to initial means, so sensitive to outliers, and of course numeric data only. Of course numeric data only को हम as such इसका कोई resolution नहीं है. This is actually a positive in the sense that कि आजकल हम हमारे पास embeddings हैं, embeddings are always numeric, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं. Okay, so सो लेट्स से लोकल मिनिमा ये निकालता है, उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं हम. तो मे बी तो रन के मीन्स टाइम्स विद डिफरेंट initial means and use the clustering that has the lower error. So in other words, आपने let's say 5 दफा के मीन्स चलाया है और हर दफा आपने के डिफरेंट मीन्स यूज किए. ऑफ कोर्स यू कैन चूज देम रैंडमली. डिफरेंट रैंडम के मीन्स यूज किए. तो पहले रन में लेट्स से टोटल एरर जो ई मैंने ऊपर लिखा था उसका कोई आ गया आपके पास वैल्यू. सो लेट्स से E1 लेट्स से 10 था. दूसरे का E2 लेट्स से आपके पास लेट्स से 9 था. E3 लेट्स से था आपके पास लेट्स से 15 था. E4 लेट्स से था आपके पास लेट्स से 11 था. एंड देन E5 लेट्स से 12 था. So obviously जो E2 है it gives you the lowest score, so you use that as the best clustering. But of course in this case you will have to run the algorithm multiple times if you want to find an optima that is closer to the global optima. ठीक है. So choose E2. ठीक है. So that's an easy way to fix that. So what about choosing your initial uh, points in a much more systematic way rather than random? So one approach, so choosing initial means in a systematic way so that we don't need to run multiple runs, and maybe that run might give you better results or the better results in one run.
तो इसमें जो एक अप्रोच जो कॉमन यूज होती है विच इज नोन एज के मीन प्लस प्लस, ठीक है. व्हाट इज द आइडिया हियर? सो बेसिकली सेलेक्ट द फर्स्ट मीन randomly, ठीक है. Select the next mean also randomly, according to the probability distribution so which is inverse to the distance of the point. So I think it's better way to explain this with an example maybe. तो लेट्स से आपने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से 1D में बात करता हूँ, 10 आपने सेलेक्ट कर लिया इनिशियल मीन. तो आपका डेटा सेट था ओरिजिनली, लेट्स से डेटा सेट था 5, 6, 9, 10, 15 and 20, let's say. So आपने 10 सेलेक्ट किया रैंडमली इनिशियली. तो नेक्स्ट जो आप सेलेक्ट करेंगे, अब 10 का डिस्टेंस विद एवरी अदर ऑब्जेक्ट. तो 10 का डिस्टेंस विद 5, 6, 9, 10, 15 एंड 20. इसकी आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दें, मीनिंग दैट जो सबसे दूर है, मे बी 10 to 20 का डिस्टेंस 10 है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट, मतलब एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी. इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, और जिस बिल्कुल करीब है 10 से 9 जो है वो क्लोज है, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी होगी. एंड देन यूज ए रैंडम नंबर जनरेटर टू चूज अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग दैट यू आर लाइकली टू गेट ए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट विच इज far away from 10, again but randomly. So there is still a chance that you might get 9, but 9 का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी होगी, 20 की ज़्यादा होगी, 15 की थोड़ी सी उसकी भी ज़्यादा होगी. एंड यू रिपीट फॉर फर्दर मीन्स. लेट्स से आपने तीसरा आप सेलेक्ट करना है, तो तीसरा भी इसी तरह ही करेंगे. पहले आपके पास 10 और 20 आ गए हैं लेट्स से, तो आप इनसे जो सबसे दूर पॉइंट्स हैं, अगेन क्रिएट a डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन सेलेक्ट रैंडमली. ठीक है. सो यू कैन नाउ डू दिस वंस एंड देन रन द एल्गोरिथम. दिस वुड बी समवट बेटर than running the algorithm multiple times with different random seeds. ठीक है. So k mean plus plus runs the algorithm only once by selecting initial means through this approach. एक select करता है, then select the next which is furthest from this point, but furthest in the sense of using the random distribution. आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, तीसरा आपने निकाला so that it's further from these 2 points using a random distribution. चौथा निकालना है तो वो इनसे दूर होंगे. ये सारे इनिशियल मीन्स आ गए, then you can cluster. So one clustering might still give you a decent good clustering. So this is k-mean plus plus. So this I think variation came in 2007. And of course, many of these variations are usually coded in the algorithm that are available in the libraries. Okay, so we have talked about initial seeds. So what are some of the other issues? For example, outliers. So this is easy to handle. So let's say आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन इज लेट्स से सिग्निफिकेंटली हायर देन द yes, in this case k mean plus plus में initial means are from the actual data points only. Yes, you're right. में जो ओरिजिनल जो k means था जिसमें रैंडम पॉइंट्स हमने ढूंढने थे, वो भी एक्चुअल डेटा पॉइंट से ही था, बट देर इज नो लिमिटेशन कि आप वहीं से लें. दे आर जस्ट मेंट टू कि वो आपके पास पॉइंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से चूज करना आसान है. But there can be some points in space. They may not be actual points, actual objects. ठीक है.
बट इनिशियल जैसे पॉइंट्स हैं, वी यूजली टेक देम एज एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स इन प्रैक्टिस, इन मोस्ट प्रैक्टिकल एल्गोरिथम्स। सो आउटलायर को हैंडल करने का अगेन सिंपल तरीका, एज आई सेड, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर असाइनिंग ऑब्जेक्ट टू ए गिवन क्लस्टर। सारे ऑब्जेक्ट्स की आपके पास डिस्टेंस की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। डिस्टेंस की डिस्ट्रीब्यूशन को भी छोड़ दें, मतलब एक्चुअल डिस्टेंसेस आ जाएंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे एज कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स, तो उसको आप आउटलायर कहते हैं। उसका असाइन नहीं करेंगे, उसको सेपरेट ही रखेंगे। यू कॉल दैट एन आउटलायर। अगर उसको असाइन कर देंगे तो उसका मीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। सो इफ ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम इट्स मीन एज कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द क्लस्टर। अब ये एज compared, you have to use some threshold or you have some criteria, whatever, कुछ भी आप असाइन बना सकते हैं। 50% हो गया, 80% of the other distances and so on, then it is not assigned but considered an outlier। ठीक है। सो आउटलायर्स आपके इस तरह हैंडल हो जाएंगे। व्हाट अबाउट एम्प्टी क्लस्टर्स? सो एम्प्टी क्लस्टर का मसला क्या था, कोई आपके पास मीन था, उस मीन को कोई भी ऑब्जेक्ट असाइन ना हो सका इन सम आइट्रेशन। इसका मतलब है कि दैट वाज एन एम्प्टी क्लस्टर, मीनिंग आपके पास लेट्स से K5 था, तो उसके बाद आपके पास एक्चुअली K4 रह गए, एक क्लस्टर में कोई पॉइंट आया ही नहीं। तो उसका सिंपल तरीका एक तो ये है कि यू चेक फॉर दैट इन ईच आइट्रेशन, एंड देन if you find there is a mean to which an object is not clustered, then you simply choose another mean and do the clustering again। मतलब पांच, जो पहले चार मीन्स थे वो तो रहेंगे, बट एक और आप मीन सेलेक्ट कर लें, डू द क्लस्टरिंग अगेन। ठीक है। ऑफ कोर्स वो सेलेक्ट किस तरह करना है, आप वही के मीन प्लस प्लस वाली अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, या रैंडमली कोई और ले लें। के मीन प्लस प्लस वाली अप्रोच क्या थी कि जो पहले के मीन से उससे देखें कौन सा पॉइंट है जो उनसे सबसे दूर है, एंड चूज वन दैट इज रैंडमली अकॉर्डिंग टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सो दिस कैन हैंडल द इश्यू ऑफ एम्प्टी क्लस्टर्स। अब जो अदर करेक्टरिस्टिक्स हैं, इट फाइंड ओनली स्फेरिकल क्लस्टर्स दैट आर ऑलमोस्ट इक्वल साइज। उनका सच कोई आप कह लें कि वर्क अराउंड नहीं है, बिकॉज दोज आर कंस्ट्रेन्ड बाय द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड बाय द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ कोर्स द नोशन के ईच क्लस्टर रिप्रेजेंटेड बाय वन पॉइंट, प्रोटोटाइप, द सेंट्रल प्रोटोटाइप ऑफ ईच क्लस्टर। ठीक है। ठीक है। सो ये सो एम्प्टी क्लस्टर का मतलब ये है कि एक मीन को कोई पॉइंट असाइन नहीं हुआ, तो यू सिंपली फाइंड ए न्यू मीन। वो जो पहले मीन सेलेक्ट हुआ था वो ड्रॉप कर दें, और जिसको असाइन नहीं हो रहा एक नया मीन ढूंढने की कोशिश करें। वो रैंडमली कर सकते हैं या के मीन प्लस प्लस के तरीके से कर सकते हैं, एंड डू द क्लस्टरिंग अगेन। ठीक है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ दिस हियर।
ठीक है। ठीक है। K means कि as I said it is heavily studied, तो इसकी tons of variations हैं, really literally tons of variations, hundreds of variations. uh, so टाइम अभी वैसे थोड़ा है। सो एक तो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू के आपने मीन लेना है या मोड लेना है या मीडियन लेना है या मेडॉइड लेना है, तो आई राइट दोज नेम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें मेडॉइड वाला एल्गोरिथम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। मेडॉइड, सो के मीडियन and K mode. So these are three additional variations, and these variations vary in the sense के prototype किस तरह define किया हुआ है, the single prototype किस तरह define किया हुआ है. Medoid is a centrally located point in the cluster. It's a point, it's actual object. It's not a point in space. So it's an object. So oid is an object, middle object or centrally located object in the cluster. K median जो है, this is the median point. It may not be an object, जैसे mean था, it may not be an object, it's a median, but not the mean. और mode है, this is for categorical data. This is the most frequently occurring point in the data. ठीक है. K median and K mode less commonly used है. K medoid फिर भी use हो जाता है, तो वो probably I think we'll discuss in the next class, because इसमें एक issue है कि इसको हमने centrally located point ढूंढना किस तरह. The rest of the algorithm is essentially the same. ठीक है. uh, so after that we'll be starting hierarchical algorithms, and then after that covering 2 or 3 algorithm hierarchy, we'll talk about graph based algorithms. We'll probably discuss one algorithm, and most importantly later on, and I might move that forward, is cluster validation. How do you decide whether a clustering is good or not? You can call this evaluation as well or validation as well. So this is an important aspect, because as data scientists, we don't blindly just accept the results that we get. We need to validate either through domain knowledge or through some automatic technique. So either by human intervention or through some automatic technique. So cluster validation be an important topic we will be discussing. ठीक है, I think I'll probably stop here, although I wanted to cover a bit more, but time नहीं अभी. Okay, one other thing, हमारा quiz 2 रह गए, 2 quizzes are left. So we don't really know कि अभी online classes चल रही हैं कि नहीं चल रही. 31 तक तो चल रही हैं, but after that we don't know. So अभी for example tentatively I will schedule the quiz the Monday following next week. मतलब next week हमारा Monday 30th है, तो I think 6 अप्रैल बनेगा. So your quiz is on 6 April. If it is online तो वो हम देखेंगे किस तरह करना, but otherwise it will be on campus. ठीक है. But I would strongly recommend कि मतलब एग्जाम्स और जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके लिए आप कैंपस में आना ही है आपने. So if you can come on campus for the quiz, that would be great as well. So tentatively next quiz is April 6 ही बनता है ना मेरे ख्याल से, Monday following next week. 31 6 1 1 plus 6 8, I think 5 बनेगा. ठीक है. ठीक है. Any questions? Any questions? Okay, another thing, आपने एक project भी करना है इस course में, slightly a bit late.
So project key details we will be sharing with you very soon. But the idea essentially, I think, would be to pick up a small problem, a paper or a specific application and implement that with some evaluation. Okay. So that would, and of course, this would be a group project. आपको groups में बनाने हैं, about 3 people. तो 3 groups बनाने आप उसके बारे में सोचने शुरू कर दें, groups. And a data science algorithm की implementation and evaluation या a data science की application with data उसकी evaluation, implementation and evaluation. So that would be a project. So we will be sharing the handout with you very soon. और groups आप बेशक बनाने शुरू कर दें. And of course you can choose your project yourself. But the choosing must be done with discussion with us, the TAs and myself. So ये फिर हम आपसे शेयर कर देंगे details. Uh, yeah, I think that's the main output of the project. एक तो ये है कि of course demo है, but demo में ना there are issues with demos as well. Uh, तो और you're saying only, no, probably not only. So आपके पास intermediate deliverables होंगे, but report would be a significant chunk. Let's say about 50% report जरूर होगा. Presentation भी शायद होगी, which will be about 15%. And एक initial आपकी एक meeting होगी जिसमें about 10 to 15%. So major chunk is of course report, but you may have other components as well. ठीक है? तो 3 probably components होंगे कम से कम, but major would be report. ठीक है? Anything else?